Hello everyone, myself Dr. Vikas Kumar Jangu, Assistant Professor of Botany in Government National College, Sirsa. Today we shall study about structure and function of chloroplast part 2. This video is prepared under the guidance of Director General Higher Education, Haryana. In previous video, we have learned about type of plastid, discovery of chloroplast, number, shape, and ultrastructure and chemical composition of chloroplast. In this video, we will study about left portion of structure and function of chloroplast. The contents of today's lecture are the chloroplast as semi-autonomous organelles. Second is the biogenesis of chloroplast. Third is the different function of chloroplast. The function we study today are the photosynthesis, energy transduction, consumption of carbon dioxide, liberation of oxygen, storage of starch, photosensitivity, reducing power, formation of chromoplast, synthesis of fatty acids, and storage of lipid. And at last, we study about the symbiotic origin of chloroplast. Let us start with the chloroplast as semi-autonomous organelles. The cell organelles which have its own DNA, RNA, ribosomes and protein synthesis mechanism is called semi-autonomous organelles. The chloroplast have its own DNA. The DNA of chloroplast are double helicals, circular, and its length is 45 micrometers. The chloroplast also have RNA. All three types of RNA, that is the mRNA, tRNA, and rRNA, are found in the chloroplast. Chloroplast also have the ribosome. The ribosome of chloroplast is 70 S types. S is stand for the Swede work unit. And the fourth is the protein synthesis is also occur in the chloroplast. In chloroplast, the code for mRNA, tRNA, rRNA, and ribosomal proteins. So we can say that chloroplast have its own DNA, RNA, ribosome. So chloroplast is semi-autonomous organelles. Now we study about the biogenesis of chloroplast. The chloroplast are grow by two ways. First is the division of proplastid and second is the division of pre-existing chloroplast by fission. Now let us start with the division of proplastid. What is proplastid? Proplastid is the type of plastid which originate from the meristemic tissue of shoot apex. सबसे पहले बनने वाला जो प्लास्टिड होता है वो प्रोप्लास्टिड कहलाता है. And this proplastid are able to convert into all three type of plastids. So when in first time the chloroplast are formed, the proplastids are converted into elioplastid and elioplastid are converted into chloroplastids. Second is the division of pre-existing chloroplast by the fissions. जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है सेल के अंदर उसमें फिजन के द्वारा वह दो क्लोरोप्लास्ट में डिवाइड हो जाता है. द फिजन इज द प्रोसेस इन विच क्लोरोप्लास्ट आर डिवाइडेड इनटू द टू क्लोरोप्लास्ट. So these two types by which the chloroplast are originated. Now we study about the function or different function of chloroplast.
The first main important function of chloroplast is photosynthesis. Chloroplast is the site of photosynthesis. Photosynthesis is the process by which the autotrophic organisms or plants are able to prepare their own foods. So the definition of photosynthesis is the photosynthesis as an enzymatic photochemical oxidation reduction mechanisms. It taking place in chloroplast with the help of photosynthetic pigments in which H2O is photo-oxidized to oxygen and carbon dioxide is reduced to hexose sugars. जो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना भोजन जो होते हैं वो खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के अंदर प्लांट्स के लीफ में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर सनलाइट को चेंज करके सनलाइट के द्वारा इसका खुद का जो भोजन है वो तैयार किया जाता है. द मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज द फोटोसिंथेसिस. द फोटोसिंथेसिस अकर इन टू फेज. First is the light reaction and second is the dark reaction. Now we study about the light reaction of photosynthesis. The light reaction of photosynthesis is occur in the thylakoid membrane of chloroplast. In this reaction, visible light absorbed by the pigments. In last video, we can study about the structure of chloroplast. In the structure of chloroplast, we study about the granum. Granum is the group of thylakoids, and each thylakoid have two thylakoid membranes. The pigments of the photosynthesis is found in the thylakoid membrane, and the light reaction of photosynthesis is occur in the thylakoid membrane. In this reaction, two events are occur. Light reaction जो होती है वो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर होती है. थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स में पिगमेंट्स पाए जाते हैं. ये पिगमेंट्स जो होते हैं वहां पे ये रिएक्शन होती है लाइट रिएक्शंस. लाइट रिएक्शन के अंदर दो मुख्य इवेंट्स होते हैं. फर्स्ट इज द फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर एंड सेकंड इज द प्रोडक्शन ऑफ एसिमिलेटरी पावर NADPH2 एंड ATP. थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में H2O जो होता है वो लाइट के द्वारा फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता है. इसका ये टूट जाता है जिससे ऑक्सीजन निकलती है और साथ में ATP और NADPH2 विच आर द एसिमिलेटरी पावर विच आर द रिड्यूसिंग पावर ये बनते हैं. बोथ रिएक्शंस आर अक्कर इन द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन. The second part of photosynthesis is the dark reaction. There is dark reaction जो होती है इसका मतलब ये नहीं होता कि ये डार्क में ही होती है. लाइट रिएक्शन जो होती है वो हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट में होती है, बट डार्क रिएक्शन जो होती है वो लाइट के प्रेजेंस में भी होती है और लाइट के एब्सेंस में भी होती है. The light reactions are occur in the stroma of chloroplast. जो क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स होता है उसके अंदर डार्क रिएक्शन पाई जाती है और इस डार्क रिएक्शन के अंदर जो एसिमिलेटरी पावर का निर्माण हुआ था ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लाइट रिएक्शन, कौन कौन सी? NADPH2O और ATP. It moves to stroma where it used in Kelvin cycle to fix CO2 into the hexose sugar. जो लाइट रिएक्शन के अंदर रिड्यूस एसिमिलेटरी पावर जो बनी थी दैट इज द ATP और NADPH2 होता है वो मूव कर जाता है स्ट्रोमा के अंदर. इस स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन के सभी एंजाइम्स पाए जाते हैं और ये एंजाइम्स जो होते हैं वो NADPH2 और ATP का यूज करके
कार्बन डाइऑक्साइड को हेक्सोज सुगर में फिक्स कर देते हैं, हेक्सोज सुगर बना देते हैं। एंड हेक्सोज सुगर जो होती है, इट इज द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। The next function of chloroplast is the energy transduction. The chloroplasts are able to trap sun energy and change it into chemical energy. The chemical energy is used by all living organisms to perform their life activity. जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो सन एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देता है, और यही जो केमिकल एनर्जी होती है ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपने लाइफ में यूज करते हैं। सो द क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो ए एनर्जी ट्रांसडक्टर। इट कन्वर्ट द sun energy into chemical energy. The next function of chloroplast is consumption of CO2. Chloroplast pick up carbon dioxide from the atmosphere during the process of photosynthesis. Photosynthesis के इसमें ये chloroplast use the atmospheric carbon dioxide. This keep the percentage of carbon dioxide balanced in the atmosphere as carbon dioxide is being constantly added it through the respirations. जो ये क्लोरोप्लास्ट होता है, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड का फोटोसिंथेसिस में यूज करता है, इससे इसका जो बैलेंस होता है एटमॉस्फेयर में वो बना रहता है, क्योंकि जैसे जैसे हम रेस्पिरेशन होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और जब एक्सेस अमाउंट में अगर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए एटमॉस्फेयर में, इट इज डेंजरस फॉर द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो the chloroplast maintain the balance of carbon dioxide in the atmosphere. Chloroplast liberate oxygen which is passed into the atmosphere. During the process of photosynthesis, the oxygen is liberated from the chloroplast. This keep the balance of oxygen constant in the atmosphere as oxygen is being consumed in the respirations. क्लोरोप्लास्ट होता है में फोटोसिंथेसिस के टाइम द ऑक्सीजन इज लिबरेटेड, ऑक्सीजन निकलती है. द ऑक्सीजन इज लिबरेटेड बाय द फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ H2O. जब H2O लाइट रिएक्शन के अंदर H2O का फोटो ऑक्सीडेशन होता है उस टाइम ऑक्सीजन जो है वो उससे निकलती है, और ये जब ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में पहुंचती है तो ये एटमॉस्फेयर के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट इसके बैलेंस को बनाए रखता है, क्योंकि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होती है. अगर ये फोटोसिंथेसिस में नहीं निकलेगी तो इसका जो बैलेंस है एटमॉस्फेयर में वो चेंज हो जाएगा. सो इट कीप द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन कांस्टेंट इन द एटमॉस्फेयर. The next function of chloroplast is storage of starch. We can say that during the photosynthesis, the last product of photosynthesis is the hexose sugars. In this hexose sugar is stored in form of starch. It is in higher plant it is stored temporarily, but in several algae it is stored permanently. जो हेक्सोज सुगर होती है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बनती है वो जल्द स्टार्च में बदल जाती है. जो हायर प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स में ये टेम्पररी स्टोर रहती है और इसका यूज हो जाता है, बट इन जो सम एल्गी हैं उनके अंदर ये परमानेंटली स्टोर रहती है इन फॉर्म ऑफ स्टार्च. Photosensitivity. Photosensitivity is the response to the light. Chloroplast of some algae like Chlamydomonas provide photosensitivity
due to the presence of stigma and eye spot in the chloroplast. जो क्लेमाइडोमोनास होते हैं, क्लेमाइडोमोनास के क्लोरोप्लास्ट में दैट एज द आई स्पॉट एंड स्टिग्मा होते हैं विच प्रोवाइड द फोटोसेंसिटिविटी रिस्पॉन्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइट के द्वारा दिए गया जो रिस्पॉन्स होता है विच इज कॉल्ड फोटोसेंसिटिविटी। एंड क्लोरोप्लास्ट ऑफ सम एल्गी लाइक the chlamydomonas provide photosensitivity because of the presence of eye spot or stigma. Reducing power. What is the reducing power? Reducing power is the strength of a chemical's ability to reduce another substance. Reduction is the ability to gain electrons. The NADH and NADPH have the reducing power. The reducing power produced during the light reaction is used to reduction of nitrate and synthesis of amino acids. जो क्लोरोप्लास्ट की लाइट रिएक्शन होती है उसके अंदर जो रिड्यूसिंग पावर निकलती है दैट इज द NADPH2 which are not only used in the direct reaction but also it is used in the reduction of nitrate and this is and synthesis of amino acids. इस reducing power का यूज जो होता है वो नाइट्रेट के रिडक्शन में किया जाता है जिससे कि एमिनो एसिड का सिंथेसिस होता है। Next function of chloroplast is formation of chromoplast. Chloroplast can be changed in the chromoplast which cause white color to many flower and fruit for attracting the animals. In last video I can say that all three types of plastid are interchangeable to each others. तीनों तरह के जो प्लास्टिड होते हैं क्लोरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट ये सभी एक दूसरे में बदलते रहते हैं। आपने देखा होगा कि जो मिर्च होती है मिर्च विच आर प्रायर इट इज ग्रीन बट इट इज कन्वर्ट इनटू रेड कलर्स बिकॉज जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो किस में चेंज हो जाता है क्रोमोप्लास्ट के अंदर और इस क्रोमोप्लास्ट की प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट इज डिफरेंट कलर ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर्स जो so the formation of chromoplast from chloroplast is a one main important function of chloroplast and which used in the different color are used to attractive the different type of animals. The other function of chloroplast is the synthesis of fatty acid. It is found that the spinach chloroplast have synthesis of fatty acids. And second is the storage of lipids. The chloroplast store fat in the form of plastoglobulin. At last, we study about the endosymbiotic origin of chloroplast. The endosymbiotic theory explains how eukaryotic cell may evolve from prokaryotic cells. And symbiosis is the close relationship between two different organisms. This diagram shows how the origin of the mitochondria and chloroplast. Because the mitochondria and chloroplast both are the semi-autonomous organelles. इनके अंदर डीएनए भी होता है, इनके अंदर आरएनए होता है, इनके अंदर 70S टाइप का राइबोसोम होता है, जिसकी वजह से ये रिजेंबल हैं किसके प्रोकैरियोटिक सेल की तरह। और ये माना गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं इनका जो ओरिजिन हुआ है वो एंडोसिम्बायोटिक हुआ है कि किस तरह हुआ है
that is the mitochondria and chloroplast likely evolved from engulfed prokaryotes that once lived in independent organism। कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट थे वो दोनों एक प्रोकैरियोट्स हैं जो कि पहले इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म थे और नाउ विच आर द पार्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। At some point, a eukaryotic cell engulfed an aerobic prokaryotic, which then formed as endosymbiotic relationship with the host eukaryotics and gradually developing in mitochondria। कि ये जो यूकैरियोटिक सेल है इसने जो एरोबिक प्रोकैरियोट्स हैं इनको इनगल्फ करके इसको अपने अंदर ले लिया और ये इसके अंदर ग्रेजुअली किस में कन्वर्ट होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। द यूकैरियोटिक सेल कंटेनिंग माइटोकॉन्ड्रिया देन इनगल्फ्ड द फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स which then formed as endosymbiotic relation with the host eukaryotic and gradually develop in the chloroplast organelles। कि ये जो पहले इसने एरोबिक बैक्टीरिया को अपने अंदर लिया और ये ग्रेजुअली किस में कन्वर्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया में। बाद में इस यूकैरियोटिक सेल ने क्या किया, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स जो पहले इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहा था उसको अपने अंदर इनगल्फ किया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, द क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल्स। सो द ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर एंडोसिम्बायोटिक एंड इट मींस ये माना जाता है कि द माइटोकॉन्ड्रिया जो था वो पहले एक एरोबिक प्रोकैरियोट्स था और जो क्लोरोप्लास्ट था वो पहले एक फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स था। So today we study about the biogenesis of chloroplast. The chloroplast are the semi-autonomous organelles, different function of chloroplast, and at last the endosymbiotic origin of chloroplast. Thank you.